Hello everyone, welcome back to the Sampan Academy. Sampan Academy को सब स्टूडेंट को स्वागत एंड आज आमे स्टार्ट करिबा बेसिकली गोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आई कैन से जो माने भी दो जो ऑल आर वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर द 2026 ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो ओडिशा सिविल सर्विस ओडिशा प्रशासन का परीक्षा पे जो माने भी प्लान करूच बा भाबुच दैट we should start. So I can dedicate this video to all those aspirants, those who all have decided to start their journey, to start their preparation. तो वीडियो को भल भाव देखिबो जहाँ भी डाउट अच्छी आई विल शेयर माय नंबर आई विल शेयर माय टेलीग्राम चैनल से कमेंट करिबो टेलीग्राम चैनल जॉइन करिबो एंड कमेंट सेक्शन में जणइबो जहाँ भी डाउट अच्छी पर्सनली मेसेज कर मध्य बुझी पारिबो तो देरी न करी आई थिंक स्टार्ट करिबा beginners ultimate strategy to crack the OPSC Odisha Public Service Commission and Odisha Civil Service. My name is Sambit Kumar. So here I am with your जहाँ भी भाभी पारिबो guide philosopher whatever you can think you can take me in that position. Before starting, just I want to say one thing that life is very unpredictable. ଏବେ ଯାହା ବି ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ ଯାହା ବି କରୁଛ give the best utilize of that day give the best utilize the resources you have with you doesn't matter कौन situation ଅଛି scenario कौन ଅଛି nobody is going to listen you it is you who will help ନିଜକୁ help କରିବ ଏ ଯୋଉ situation ରେ ଅଛ ଯେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ upbringing କରିବା ଆମେ ଯାହା ବି ହଉ screen ରେ ଯୋଉ photo ଟି ଅଛି ଆର୍ଥର ଆସେ one sir has told ki start where you are use what you have do what you can start where you are begin now don't wait for the perfect time I request everybody ମୁଁ ସାର୍ ଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ବହୁତ ସାରା ଫିଲୋସଫର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ पर्सन ए पृथ्वी पृष्ठ जन्म नहीं निज निजर लेगेसी निज निजर हिस्ट्री विश्व इतिहास रे लिखी जाइछंती जे पर्यंत ए मानव सभ्यता थिबो से जाए प्रत्येक व्यक्ति से मानकु देखुथिबे शुणुथिबे निजर इतिहास रो निजर सक्सेस रो गारिमा विश्ववासी को से माने देखि दी जाइछंती सारे बढ़िया कथा कहिछंती स्टार्ट फॉरएवर जोठी भी अच्छा स्टार्ट don't wait for the perfect time don't wait for the perfect moment don't wait for the any good moment आज जे डिसाइड करछ मते स्टार्ट करिबा छी आई वांट टू बिकम एन ओएस ऑफिसर मते गोटे ओपीएस ऑफिसर बनिबार अछि मते गोटे ओएफएस ऑफिसर बनिबार अछि जहां भी whatever the dreams you have to start the journey as soon as possible don't wait for the right time because right time never comes you have to make the time right use what you have make the most of your current resources जहाँ भी अच्छी जदि जितनी की रिसोर्स अच्छी जदि हमें देखिबा भगवान जदि हमको किसी ब्रेन देइचंती God has given us a good body good memory that is the best resource materialist जिनसे कहा पाकर थाई पारे न थाई पारे but we should not complain कि हम पाकर नाही you cannot move हम पाकर नाही you cannot study हम पाकर नाही you cannot change our situation whatever you have whatever the resources God has given make the best utilize of that resources that will make the best version of you because a civil service nothing they will check how much you are able to do things with the minimum input with the minimum resource maximum output the scenario of governance and do what you can केबे भावना जे आम द्वारा किछि हबनी बहुत छोट छोट स्टेप रु take small steps daily consistency beats perfection nothing is perfect my dear aspirants you have the capability you have the quality that to do anything anything means you can rock the world with your talent with a small step
प्रत्येक स्मॉल स्टेप्स को लीड करी थाए गोटे लॉन्ग जर्नी को कवर करिया पे जदी मते पचारे पर्सनली हाउ हैव यू कवर्ड ऑल दिस थिंग्स प्रतिदिन छोटो छोटो स्टेप्स ही गोटे एस्पिरेंट को नॉर्मल कंडीशन नु गोटे ऑफिसर बनाए दैट इज द थ्री गोल्स सो आई थिंक यू हैव ऑल हैव निजर माइंड रे ई सब कथा भल से फिट करूथिबो तो आमे बुझिबा भल से केमती आमे स्टार्ट करि परिबा ओडिसा पब्लिक सर्विस कमिशन रा ओडिसा सिविल सर्विस एग्जाम को टू फुलफिल आवर ड्रीम टू फुलफिल आवर पेरेंट्स ड्रीम टू मेक to see ourselves in coming years as an officer. All right, friends. The Odisha Civil Service Examination, Odisha Prasasanika Sabha has divided जो तीन भागरे परीक्षा डिवाइड होइछि. I am showing you everything. Just pay attention. आराम से जोटी भी अच्छा विदाउट हैविंग एनी टेंशन वीडियो को देखि चलो डाउट हेले मते पचारिबो कमेंट सेक्शन जणैबो. Hopefully you all have got aware about it. प्रथम राउंड टी होची गोटे प्रिलिमिनरी परीक्षा हुए माय डियर एस्पिरेंट. सेकंड होची गोटे मेंस एंड द फाइनल टेस्ट इज द पर्सनालिटी टेस्ट बा हम जोटा इंटरव्यू को ए तीनटा राउंड क्लियर कला परे यू विल गो टू द ट्रेनिंग वेयर एवर जो भी कैटेगरी मिलू विल गो टू ट्रेनिंग एंड ड्रॉप देयर रेस्ट ऑफ द करियर जस्ट लिव इट बहुत बढ़िया लगे. तो ओडिशा सिविल सर्विस रे हमको पाइबा को हबो हमको गोटे प्रिलिमिनरी परीक्षा दबा पड़िबो. देन प्रिलिमिनरी क्लियर बा स्टेज 1 क्लियर कला परे वी विल गो टू द स्टेज 2 दैट इज द मेंस which is basically subjective and then we'll go for the personality test where tamara personality tamara character tamara knowledge tamara conscious tamara subconscious everything will be determined by the group of commission jo mane be members they will check everything of yours to give you a tag that whether you will whether you are capable of doing administrative works or not to serve the Odisha to serve the people of Odisha लोकमान सहित केते रही पारिबो केते अटैच्ड हे पारिबो that will decide by these three steps. I think you are getting my point. Odisha civil service रे हमको जदी पाइबा को पड़िबो हमको the preliminary then mains then we'll have to appear for the personality test. All right, already I have told you the OPSC selection process has been divided into three distinct stages. One is the preliminary test, another is the mains, another personal test. Preliminary test रे aspirant कौन हुए objective type रो question सब आसे. You all have you must have acquainted with the pattern. Objective type रो हुए जोटा कि screening test to shortlist candidate for the mains. Screening अर्थ एठी हमर गोटे 200 मार्क रो परीक्षा में आगामी स्लाइड आगो स्लाइड रो अछि 100 टी क्वेश्चन आसी थाए. इस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क इस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क. तो ए प्रिलिमिनरी परीक्षा हमें जदी उत्तीर्ण हबा देन वी विल गो फॉर द मेंस रे हमें देखिबा केमती कोन सिलेबस छी मार्क कोन हमें गोटे प्रथम कथा जानिले हम गोटे प्रिलिमिनरी एग्जाम दाय पड़िबो. प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कला पर ऑब्जेक्टिव प्रिलिमिनरी मोस्ट हला कोन ऑब्जेक्टिव टाइप रो क्वेश्चन सब एथरे आसीबो. ए क्वेश्चन रो चारिटी ऑप्शन थिबो स्टेटमेंट थी ता भितर हमको ए बी सी डी भितर गोटे गोटे आइदर ए कि बी कि सी कि डी भितर हमको गोटे बाछेम पड़िबो. हमें एही परीक्षा जदी कट ऑफ क्लियर करिबा देन हमें मेंस पई सिटिंग हबा एवं मेंस रे एसे टाइप रो जोटे कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप रो थाए रिटन टेस्ट टू असेस द डेप्थ ऑफ नॉलेज राइटिंग स्किल्स एंड एनालिटिकल थिंकिंग. तम भितर गोटे एनालिटिकल बा रेशनल थिंकिंग प्रत्येक स्टूडेंट्स में गोटे कथा कहबी या भितर you should build your analytical skill and at the same time we have to think like a rational person. हमारा जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाए से इमोशनल इंटेलिजेंस को हमको बढ़ेबार अछि. we have to think like a rational person, we have to think like an analytical person, then we can be able to make good answers in the main examination as well in the whole services. खाली सर्विस ने हमको लाइफ रे मध्ये गोटे रैशनल पर्सन हबार अछि so that we can be a good person in the society for the nation. Thank you. हमें मेंस क्लियर कला परे विल सिट फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट. पर्सनल टेस्ट और जोड़ा इंटरव्यू में कहती फाइनल स्टेज टू इवैल्यूएट द कैंडिडेट्स पर्सनालिटी
कॉन्फिडेंस केते अछि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी केते अछि बिकॉज तमे जतले कोनसी तहसीलदार बा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बा कोनसी जहां भी आईएएस ब्रो जहां भी हो सेठी तुम डिसीजन रे ही एवरीथिंग विल बी डिटरमाइंड तो निजर कॉन्फिडेंस केते अछि स्ट्रेस को कोन केमने हैंडल करि पारुछ डिसीजन मेकिंग नंबर कैपेबिलिटी हमें छोट बो जेम तमे सबले बापा मां कथा पर पचरंती कि एटा कोन हबस नो यू हैव टू बर्तमान तमे सिविल सर्विस पे निजे को योग्य भाबुछ कि यू हैव डिसाइडेड दैट वी शुड प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस सो दैट निजर डिसीजन नंबर क्षमता बढ़ेबार आवश्यकता बे अछि आउ सेल्फ अवेयरनेस कॉन्शियसनेस सब कॉन्शियस पूरा अलर्ट रहबार आवश्यक अछि कोन घटुची थिंक लाइक ऑफिसर फ्रॉम द डे वन यूपीएससी हो ओपीएससी इज नथिंग बट से माने गोटे स्टैम्प दे कि तुमको आग सीढ़ी को नेबे बा आगामी सपन को में बट निजको डे वन नो यू हैव टू मेक योरसेल्फ एज एन ऑफिसर द क्वालिटी शुड बी डेवलप्ड विद इन यू ऑल राइट तो हमें जानिले प्रिलिमिनरी मेंस एंड इंटरव्यू बा पर्सनालिटी आगु बहुत सारा वीडियो आसीबा हमें बुझिबा डिटेल्स सब विषय जो गोटे ओवरव्यू दबार अछि जो माने चाहूच केमती कोन करिवो कोन आगु को जिवो केमती the preliminary exam is the first stage of the OPSC exam already I have told about it preliminary exam होची first stage and एबे जदि हमें preliminary exam को segregate करिबा बा तार हमें डिटेल बुझिबा it has two papers the preliminary exams again is divided in two parts one is the GS1 second one is the GS2 गोटे होची हमर जनरल स्टडी पेपर 1 जोटा कि 200 मार्क हम कहितली 100 टी क्वेश्चन एथरे पडिबो 100 टी क्वेश्चन एथरे 100 टी क्वेश्चन एस्पिरेंट पिला माने 100 टी क्वेश्चन पडिबो each question carry 2 marks each question carry 2 marks 200 मार्क रो how much marks you are securing that will decide your एटा डिसाइड करिवो तमे मेंस पई एलिजिबल होउच कि नाही कट ऑफ थाए प्रति वर्ष कट ऑफ आसी कट ऑफ विल डिसाइड एवरीथिंग एंड ए जो सी सर्ट पेपर टी रहिला हमर 200 मार्क अछि ए सी सर्ट पेपर रे जस्ट यू हैव टू सिक्योर 66 बा हमको गोटे क्वालिफाइंग एटा ई सी सर्ट पेपर होची गोटे क्वालिफाइंग पेपर हमको एथरे क्वालिफाई जस्ट करिवार अछि एटा हम क्वालिफाई कले माने ठीक जदि कट ऑफ क्रॉस करिवा देन वी विल मूव फॉर द मेंस परे हम जाई कि इंटरव्यू को जिबा बुझि पाइला बोथ पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव टाइप ए सी सर्ट हो बा जेएस1 हो जो प्रीलिम रे अछि से बोथ आर ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस रो क्वेश्चन पड़े एमते न हो जे खाली डैश पूर्ण पड़िबो ना गोटे क्वेश्चन थिबो जदि क्वेश्चन गोटे देइछि तार चारटी ए बी सी डी ऑप्शन थिबो ता भितर तुमको ओएमआर सीट रे ओएमआर सीट मु देखेबी नेक्स्ट स्लाइड रे नेक्स्ट एपिसोड रे ओएमआर सीट रे हमको ए की बी की सी की डी गोटे बाछिबार अछि एंड सी सर्ट रे क्वालिफाइंग मार्क हम जदि क्लियर करबा देन हमें मेंस को जिबा आउ मोस्ट इंपोर्टेंट होची ईच पेपर इज ऑफ 2 आवर्स ये प्रतिटी जो समय निर्धारण अछि हमर एटा होची 2 घंटा परीक्षा जनरली करा जाए जो पेपर 1 पाई 2 घंटा तापर किछि गैप्स थाए देन पुनी सी सर्ट पाई हमको 2 घंटा समय मिली थाए द एग्जाम इज ओनली ए जो परीक्षा डी हमें दउचंती प्रिलिमिनरी रे से जेएस1 हो बा जेएस2 हो प्रिलिमिनरी कथा कहूची एगुडी को तमरा फाइनल राउंड बा मेरिट लिस्ट पई कंसीडर करा जिवो नाही it marks are not added to the final result ए मार्क टी तमरा फाइनल रिजल्ट पई केबे कंसीडर करा जिवो नाही if you qualify the prelims then you can appear for the main exam जदि तमे प्रीलिम क्वालिफाई करछ then only you will appear for the main exam बा मन रख ए परीक्षा टी केवल प्रिलिमिनरी पई डोंट माइंड सेट करिबन जे आर मार्क तमे जे 200 200 रखिबो सी सेट 200 200 रखिबो क्वालिफाई करिबो तो श्योर किंतु किछि फायदा नाही बिकॉज़ ए गुडी को मेरिट रे आले गोटे मार्क भी जीवन है जतले तम फाइनल मेरिट लिस्ट बाहरिबो I think you all have got my point. Move to the next slide. All right. Thank you. We have to move to the next slide. Just a minute, guys. I think you must have got the basic idea of preliminary exams. Then we have to move to the most important part of the civil services exam, that is the mains, that will decide your every prelim भी बहुत गुरुत्वपूर्ण but mains decide करिवो whether you are capable of going to the interview and then after live your dream life. So focus on the mains part because it's one of the most critical part of the civil service examination जोठी it is टेस्ट जोठी बहुत सारा जिनसा टेस्ट हुए 2 घंटा 3 घंटा एग्जाम रे एवरीथिंग इज बीइंग टेस्टेड देयर 3 घंटा एग्जाम रे
Our talent, our awareness, critical thinking, everything will be just there within the span of 3 hours only. So pay attention and line by line भल से सुनो जहाँ भी डाउट अच्छी ask me, ask in the comment or ask in the telegram group. जदि बेसी डाउट अच्छी just directly put a message in my number. I will give my number there. Already you have got about the prelims. So right now we are only focusing on the mains. The mains paper has divided into two parts. मेंस टी दुईटी पार्ट रे डिवाइड हेची गोटे होची पार्ट 1 गोटे होची पार्ट 2 काइंडली ऑल आर रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन जे भी जोठी अच्छा टोटल भी क्लास देखिबो प्रॉपर्ली सुनो खातारे नोट डाउन कर दबा मेंस पार्ट टी दुई भाग रे विभक्त गोटे होची पार्ट 1 गोटे होची पार्ट 2 क्लियर मेंस टी दुई भाग एबे पूरा प्रीलिम कथा माइंड भूली जाओ जस्ट रिमूव एवरीथिंग मेंस टी दुई भाग रे विभक्त अछि गोटे होची पार्ट 1 गोटे होची पार्ट 2 पार्ट 1 टी पिला माने कोन पार्ट 1 होची क्वालिफाइंग पेपर एबे सी साट रो क्वालिफाइंग कथा किछि भाबो नाही मुंडु काढी दियो एबे ओनली फोकस इन द मेंस पार्ट 1 टी होची क्वालिफाई माने मेंस रो दुईटी भाग अछि गोटे होची पार्ट 1 गोटे होची पार्ट 2 पार्ट 1 होची क्वालिफाइंग पेपर गोटे रे अछि ओडिया अछि 250 मार्क रो इंग्लिश लैंग्वेज मध्ये बहुत है लैंग्वेज पेपर इंग्लिश लैंग्वेज मध्ये अछि 250 मार्क रो and a 250 mark ru you have to secure 25% to qualify ता अर्थ जो माने प्रीलिम क्लियर करिवे प्रीलिम क्लियर कला परे से माने मेंस को आसीबे एंड मेंस रे प्रथमे से माने क्वालिफाइंग पेपर देबे आ जोटा हमर ओडिया लैंग्वेज अछि आ गोटा होछि इंग्लिश लैंग्वेज एते रे ता अर्थ तमे मेंस सब पेपर दबा बट ए जो लैंग्वेज पेपर रे ओडिया एंड इंग्लिश रे यू हैव टू सिक्योर 25% 25 मार्क परसेंट रखिले पिला माने तमरो जानि कि एई पार्ट जो पार्ट 2 रा हम कहिबी डिस्कशन करिवि जोटा कि तमरो काउंट हबो बा एइटा ही तमरो मेरिट को तमरो डिसाइड करिवो तमे पाइबो कि न पाइबो बा इंटरव्यू को जिवो कि न जिवो तो एथरे क्वालिफाइंग पेपर यू हैव टू सिक्योर 25% इन दिस पेपर एंड मेंस रो मोस्ट इंपोर्टेंट आसले अब जानि कि पार्ट 2 जोटा डिसाइड करिवो मेरिट तमरो कोन अछि बा मेरिट पई एटा काउंट को जिवो कौन कौन पेपर अच्छी ना फास्ट अच्छी पेपर 1 जोटा हमर एसे कहउचंदी ये लैंग्वेज पेपर अलगा ये लैंग्वेज अलगा एठी आसला हमर पेपर 1 रे जोटा हमर इंग्लिश एसे आसीबो एठी पेपर 1 ने इंग्लिश एसे आसीबो इंग्लिश एसे पेपर 2 जोटा हमर कोनती जीएस1 पिला माने पेपर 2 और अर्थ होची जीएस1 जनरल स्टडीज 1 पेपर 3 रो अर्थ होची जीएस2 पेपर 4 अर्थ होची जीएस3 पेपर 5 रो होची जीएस4 जोटा एथिक्स कहउचंती एंड पेपर 6 होची हमर ऑप्शनल पेपर ऑप्शनल पार्ट 1 पेपर 7 होची ऑप्शनल पार्ट 2 एवं ईच हैविंग प्रत्येक पेपर कैरी करंते केते मार्क 250 मार्क ए गुडी का ये भी जदियो 250 मार्क बट ए माने 250 मार्क कैरी करंती एंड टोटल हमर 1750 मार्क हबो बुझी पाइलो ना कौन बुझिलो ना मेंस रे दीटा कैटेगरी अछि गोटे अछि पार्ट 1 अछि गोटे पार्ट 2 अछि पार्ट 1 जो अछि ओडिया इंग्लिश लैंग्वेज सेटा को हमको जस्ट 25% मार्क रखि हम क्वालीफाई करिबार अछि सो दैट हमर मेरिट पेपर जो अछि एगुडी को डिसाइड करिबा हम रैंक बा इंटरव्यू सहित मार्क मिस की रैंक आसीबो एंड एठी जति के पेपर अछि ईच पेपर कैरी 250 मार्क एंड समुदाय देखिबा जदी 1750 मार्क हमर परीक्षा करा जाय एवं ए 1750 एवं हमर जोटा पर्सनल टेस्ट एठी मेंशन करछि ये भी 250 मार्क रो टोटल समुदाय 2000 मार्क परीक्षा त माने पिला माने दबो ए पर्सनल टेस्ट होची पीटी होची 250 मार्क 250 मार्क सो ये 250 ये 1750 मिसी के टोटल 2000 मार्क रो परीक्षा दबो जति तमे रखिबो दैट विल डिसाइड योर मेरिट बुझी पाइलो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि जो कहली पार्ट 1 देखिथिले क्वालिफाई पेपरटा कोन अछि 250 रे द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन शैल बी एटा ऑफिस ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन सेटा स्क्रीनशॉट नानी कि शो करूची द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन शैल बी ब्रॉडली एज फॉलो में डिस्कशन करबा डिटेल्स क्वेश्चन केमती दस के ओवरव्यू दोची एतरे आसीबो प्रेसेस आसीबो वोकैबुलरी आसीबो शॉर्ट एसेज आसीबो जोडा हमर 250 मार्क रो
एंड एठी हमको 25% रखिबार मार्क अछि टू क्वालिफाई लिखि दिया बोल से एटा पार्ट 1 जो मेंस रो दीटा कैटेगरी अछि मेंस रो दीटा कैटेगरी पार्ट 1 आउट पार्ट 2 जो अछि एटा होची पार्ट 1 बा क्वालिफाइंग नेचर दीटा गोटे ओडिया लैंग्वेज गोटे होची इंग्लिश लैंग्वेज एटा होची ओडिया लैंग्वेज रो दीज आर द सिलेबस एटा एटा होची इंग्लिश रो एथरे भी ऑलरेडी हम डिस्कशन करसन प्रीवियस स्लाइड एथरे भी 250 रु तुमको 25% रखिबार अछि टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड डिफिकल्ट किछि न क्वालिफाई करबा जोटा मैं कहूली फास्ट अच्छी पेपर 1 होची जेएस पेपर 1 होची एसए जोटा कि इंग्लिश एसए तापर आसबो पेपर 2 रे हमर आसबो जनरल स्टडी कोन अछि इंडियन हेरिटेज अछि कल्चर ओडिसा हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी एटा ना जेएस पेपर 1 एटा पिला माने ए सब होची ताकू प्रीलिम्स से तो कंफ्यूज करबनी दीज ऑल आर फॉर मेंस प्रीलिम रा मु देखेबी सिलेबस दीज ऑल आर फॉर मेंस एगुडी को सब मेंस पई एगुडी को मेन सिलेबस प्रीलिम सिलेबस आई विल शो यू एगुडा सब मेंस पई एंड 250 मार्क इज कैरी टोटल 1750 मार्क रो हमर एग्जाम हबो पेपर 1 जोटा कि होची हमर एसए देन जेएस पेपर 1 होची 250 मार्क कोन होची इंडियन हेरिटेज कल्चर ओडिसा हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ ओडिसा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी देन आसीबो जेएस पेपर 2 जेएस पेपर जोटा हम कॉमनली हम जानि थानी पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस इंटरनेशनल रिलेशन एटी पॉलिटी पढिबो कॉन्स्टिट्यूशन पढिबो गवर्नेंस पढिबो सोशल जस्टिस पढिबो एवं इंटरनेशनल रिलेशन भारत सहित विश्व रा केमति रिलेशन अछि टोटल इंटरनेशनल रिलेशन का हमको पढिबार अछि जेएस 3 रे अछि कोन पिला माने जेएस 3 होची टेक्नोलॉजी साइंस टेक जोटा हम कोन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट सिक्योरिटी internal security jota disaster management I think you all are getting my point these are for the mains perfection ba mains syllabus egudi ko sabu prelims to ketale bi taku confuse karibo nahi and general study ba GS4 re kon dekhuchandi ethics integrity aptitude and you all must have known about it paper 6 hochi optional जोड़े पेपर 250 मार्क एंड 250 मार्क मिसी 500 मार्क रहउची ए सब मिसी कि हमर 1750 मार्क मेंस रे हुए एवं आमे देखिचंती पर्सनल टेस्ट रे 250 मिसिकर सब 2000 मार्कर परीक्षा हुए देखि द स्क्रीन रे जहा छी अगेन आई एम कहूची सब मेंस पई ए सब मेंस पई सिलेबस कंफ्यूज होने प्रीलिम देखि बागु स्लाइड रे these are the optional subject list of optional subject for men's examination optional कौन छी एग्रीकल्चर अछि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अच्छी एनिमल हजबेंडरी एंड वेटनरी साइंस अच्छी एंथ्रोपोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिशरी फॉरेस्ट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस फिलोसफी फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस पीएसआर साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी स्टैटिस्टिक्स जूलॉजी लिट फॉलोइंग हिंदी इंग्लिश लिटरेचर मध्ये अछि नेक्स्ट स्लाइड एगुडी को सब ऑप्शनल सब्जेक्ट हम जोड़ा देखिले प्रीवियस स्लाइड ऑप्शनल जोड़े पेपर अछि एगुडी कला ऑप्शनल सब्जेक्ट जे भी जानबो दुईटी पेपर 250 दबो आउ कोन होइला बहुत सारा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल एवं द स्टूडेंट ज्योग्राफी जियोलॉजी हिस्ट्री होम साइंस लॉ मैनेजमेंट मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज जो देखुतले ए सब लैंग्वेज रे मध्ये ऑप्शनल अवेलेबल अछि yes already I have told ki all your papers essay just a minute guys all your papers जहाँ भी सब अच्छी just a minute though I have to highlight certain things yes. जहाँ भी सब अच्छे टी ऐसे जनरल स्टडी ऑप्शनल स्टडीज
will be checked at the same time as your Odia and English language papers. These are qualified papers. जोटा हम कही 25% in both and Odia and English papers माने पड़िबो. If you don't get 25% marks in either Odia or English, your main paper won't be evaluated further even if you are written them well. बहुत भलो भाव लिखितले भी हमको जोड़े पेपर को हमको सतरे 25% रखी क्वालिफाई करिया पे पड़िबो सो दैट हमर मेंस पेपर मेरिट पई जोड़ा सब अछि से पेपर गुडी को काउंट पई जिवो. बे भलो भाव रे अटेंशन देखि देखो बिकॉज़ प्रीलिम रे सिलेबस बे मु तुमको बुझौची डिटेल सिलेबस जहाँ भी सब ऑफिशियल वेबसाइट रू आई हैव डाउनलोडेड detailed syllabus for the preliminary examination, that is paper 1 preliminary जोड़ा हम देखितले paper 1 DS1 जोटा ओटा होची paper 2 एटा prelim रो paper 2 होची गोटे C-SAT कथा परे देखिबा. एबे paper 1 जोटा prelim पई GS1 टा देखिबार हमको अछि. फर्स्ट कोन अछि current events of national and international importance. फर्स्ट गोटे ऊपर गोटे हम कहूच सुनो. फर्स्ट कोन अछि फर्स्ट अछि current events of national and international importance. Second अछि history of India and Indian national movement. Third अछि history of Odisha and Odia nationalism. Fourth अछि Odisha and Indian geography, that is physical, social, economic geography of India and as well the world. तापर अछि पिला माने prelims रे कोन अछि हमर polity and governance अछि, constitution अछि, political system अछि, पंचायत राज अछि, public policy अछि, rights अछि, issues regarding मध्ये अछि, economic and social development, sustainable development किपर करि परिबा, poverty, inclusion, demographic, social sector एगुडी को अछि. तापर अछि environment, ecology, biodiversity, climate change एवं लास्ट अछि general science. हमें गोटे पर गोटे तो जहाँ मेंशन अछि कह देली, बट एबे हम गोटे पर गोटे ताकू रिकॉर्ड करिबा गोटे ओभर बेसिक ओभरव्यू नबा. दिस इज नॉट द क्लास फॉर डिकोडिंग ऑफ सिलेबस, बट बेसिक ओभरव्यू दोचे हम कोन करिबार अछि, केमती स्टार्ट करिबार अछि. तो काइंडली आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन. You have got the idea about the preliminary syllabus. तेबे नेक्स्ट स्लाइड को हमें भी जिबा. मैं गोटे गोटे पॉइंट मको डिकोड करूनी, बट खाली बेसिक ओवरव्यू दोची केमिति हाउ यू कैन स्टार्ट योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, केमिति स्टार्ट करि पारिबो. जो फर्स्ट पॉइंट सेठी थिला जे करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस. पिला माने सिविल सर्विस रो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होची, I can say from my journey, I can say from my own experience that you have to remember the syllabus जिते जल्दी पारुच. तो राति 3टा उठे कि पचारि पिला माने सिलेबस को उठिबो संग संग कहिबो ए भार निज को प्रिपरेशन करो. सिलेबस पूरा माने पार्ट ऑफ योर लाइफ कर दियो. सकाळ संध्या जते बेले माने फ्री टाइम पाउच सिलेबस को बसी पढो, कना सिलेबस बहुत इंपोर्टेंट इस एग्जामिनेशन रे. जते पढिबो जानिबो सिलेबस वैल्यू एंड केते इंपोर्टेंस अछि थ्रू द जर्नी थ्रू द एग्जामिनेशंस. तो एंड बहुत डिटेल हमको आ गोटे पब्लिक सर्विस एग्जाम होची माने सिलेबस बहुत बहुत भाबी छै से माने सेट द सिलेबस सेथे लागि निज को सिलेबस एक्वेंटेड जते परच करो. फर्स्ट कोन अछि करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस. ता अर्थ हमको करंट अफेयर्स गोटे जनरल परसेप्शन रे हमको करंट अफेयर्स पढिबार अछि. केमती पढिबा, कौन करिबा कौन न करिबा, हमें नेक्स्ट क्लास रे से सब डिटेल आलोचना करिबा. आज गोटे बेसिक ओवरव्यू जिबा. रीडिंग न्यूज़पेपर डेली इज ए गुड हैबिट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन. यू कैन रीड द कोटा पढि पारे पिला माने हिंदू पढि पारिबो. बहुत सारा पेपर आसुची. जस्ट टू गेट सम आइडिया को इन्फॉर्मेशन अबार अछि. आइदर चूज हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज जहाँ भी आसुची. एंड केमती कौन पेपर पढ़ा जिवो, टारगेटेड कौन केमती करि पारिबा, पेपर को कौन पढ़िबार अछि कौन न पढ़िबार अछि. आई विल
I'll make a separate video for it. You can get the idea from there. And for local jodi Odisha related amku news jane barchi, I can suggest so many papers are there. But of that fact, my personal choice that is the Samaj बहुत भल लगे तार साहित्य को लेखा जहाँ भी जो वे रे दे हैव डिजाइन टुवर्ड्स से माने खबर को प्रसारण करंती बा खबर को लिखंती बहुत बढ़िया भाई लिखंती बहुत सारे पेपर अच्छी बट दीज आर माय पर्सनल चॉइस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो तुम लैंग्वेज सुटेबल लागुचे एंड बुझी पारछ यू हैव द राइट एंड यू हैव द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी रहिबार अछि सो दैट यू कैन टेक एनी वन ऑफ द आइदर टेक हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश एंड समाज ओडिसा ओडिया पे धरित्री अछि समाज अछि ता भी आसुची बट आई कैन सजेस्ट यू कि go for the Samaj newspaper. It can help you updated रहे पे and जहाँ भी हम around घटुची regular study दरकार newspaper important सेथि लगी केमिति कोन पढिबो हम कहिबा make a part of it गोटे ऑफिसर है पे तुमके सटन गोटे ऑफिसर लाइफ हवा पे प्रेशर भाबी कि न्यूज़पेपर पढिले न्यूज़पेपर लागिबो पाठ गोटे सकाळ उठिला मॉर्निंग रू फ्रेश है कि स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर चाह पियो कॉफी पियो जहाँ भी within 1 to 2 hours you can कौन घटुची गोटे आइडिया रखो गोटे बेसिक आइडिया रखो तुम सहित कौन घटुची तुम जो समाज रहुच जो देश रहुच जो राज्य रहुच जो विश्व रहुच कौन घटुची कौन घटी जाउची कौन घटिबार अछि गोटे आइडिया रखो आइडिया बहुत मैटर करे ताको एनालिसिस कर अरे एटा एम हेची कौन एटा ठीक होची सेल्फ एनालिसिस सेट डिटरमिनेशन कौन घटुची एटा हितले भलो थांदा कि थिंक लाइक दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर हम ता माने नु जे पिला मा न्यूज़पेपर देइची गोटे पेज में एमती देइची पूरा लाइन बाय लाइन देइची उठे संगे संगे खाता रे कॉपी कर दे ना एमती करा जाय ना यू हैव टू रीड इट पेपर पढ तार केमती पढा जिवो मु कहिबी गोटे हैबिट रख हम उठिबार अछि हां एटा ओडिसा रे रहिची इंडिया रे घटुची कि एमती वर्तमान पहलगाम इशू चलची जहां भी मु एनालिसिस कर कोन हे परिबो एटा को पेपर से लिंक हबो केमती मु ताकू सब डिटेल एनालिसिस हमें करिबा बट आइडिया रख हमको पेपर गोटे कंपलसरी पढिबार अछि इंग्लिश रे गोटे आ ओडिया रे गोटे निहाती आवश्यक अछि माने ओपीएससी दोच गोटे दरकार अछि ओडिया न्यूज़पेपर लाइक कि कहबी दि समाजटा गो फॉर दि समाज नेक्स्ट बा हमर सेटी जोडा हिस्ट्री पार्ट थिला प्रीलिम सिलेबस से जो हिस्ट्री पार्ट टी अछि तो हिस्ट्री पई बहुत सारा बुक्स अछि एटा कंप्लीटली गोटे बिगिनर पई बा बेसिक जोडा फाउंडेशन कहिबा में बेसिक फाउंडेशन जर्नी जोटा हमें कहि परिबा फाउंडेशन क्लास बा फाउंडेशन जर्नी जदि हमें कहिबा फाउंडेशन वे फाउंडेशन अप्रोच फाउंडेशन परसेप्शन फाउंडेशन वे रे केमती निजु को नै परिबो गोटे बेस फाउंडेशन ऊपर तमे निजर पूरा जहाँ भी करबो पूरा एंटायर से ऑफिस रो तमर जर्नी रहइबो ई फाउंडेशन ऊपर से फाउंडेशन को स्ट्रांग करया पे वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सर्टेन थिंग्स कोन हमको फास्ट हिस्ट्री पे पिला माने हमको एंशिएंट पार्ट पई क्लास 6 रो जो आवर पास्ट बही आसे क्लास 6 आवर पास्ट जो बहीटी आसुची वी हैव टू फोकस ऑन दैट हमें एनसीईआरटी सिंपल एनसीईआरटी आनी परिबा जो माने आनी भी न पारछ हमें सिंपल गूगल रे सर्च करके एनसीईआरटी बही अवेलेबल छी ओल्ड पढ़ न्यू पढ़ दैट डजंट मैटर बट ओल्ड एनसीईआरटी जहां भी सब ओल्ड माने बहुत पुरानो एबे जो सब रिसेंट बहुत सारा एनसीईआरटी वर्ष चेंज थला हमर न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे एनसीईआरटी पर सब चेंज हेची तो जहां भी अवेलेबल अछि से न्यू आसु ओल्ड आसु हमको किछि फरक नहीं और एबे कहबी रिसेंटली जो एनसीईआरटी सब भी अछि ओल्ड अर्थ ओल्ड भी बहुत पुराना एनसीईआरटी अवेलेबल और रिसेंटली जोड़ा सब अपडेट होउची प्रति 2-3 वर्ष रे जहां भी पारो डाउनलोड करके हमको एनसीईआरटी गोटे पढिबार अछि काहे कि हमको बेस फाउंडेशन स्ट्रांग करिबार अछि एनसीईआरटी प्रति सब्जेक्ट रे पढिबार आवश्यक नहीं बट सर्टेन सब्जेक्ट रे एनसीईआरटी इज वेरी मैंडेटरी पार्ट बिफोर jumping before going to any standard book बा रेफरेंस बुक जहां भी सब अछि we have to follow certain एनसीईआरटी because एनसीईआरटी बहुत मायना रखे ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो पढिबार तो एंशिएंट हिस्ट्री पई मोटे डिजाइन करछि हमको क्लास 6 रा आवर पास्ट बहीटी को अवेलेबल फोटो देई परि नहीं ड्यू टू प्रॉक्सिटी ऑफ माय टाइम तो आवर पास्ट में पढि परिबा एंड तास जेहेतु मैं एंशिएंट पिला मन जदा एंशिएंट स्टार्ट करछो मु धरे हम हिस्ट्री पढिबा केमति को पढिबा मु डिस्कशन करिबी हिस्ट्री रे तीनटा कैटेगरी थाए एंशिएंट मिडिएवल एंड मॉडर्न हमको रैंडमली एंशिएंट को चैप्टर मिडिएवल एमती पढा जाय नहीं भलो सरीबो नहीं एंशिएंट उठेला माने एंशिएंट फास्ट एंशिएंट बही पढ तार कोन क्वेश्चन अछि देखो तार मेंस रे कोन अछि देखो देन सइला परे किछि एमसीक्यू ताको हम करिबार अछि देन हमको मिडिएवल को जिबार अछि सिमिलरली मिडिएवल एंशिएंट पढिबार अछि स्टैंडर्ड बुक पढिबार अछि किछि मेंस क्वेश्चन किछि प्रीलिम क्वेश्चन देन हमको मॉडर्न को जिबार अछि ई भली वेरे प्रोसेस करले हम गोटे आइडिया पाइबा आ जे रैंडमली आकुदीटा ताकुदीटा एमिति करे किछि सरीबो नाही वर्ष पर वर्ष ईयर आफ्टर ईयर जाउथिबो
फाइनल रिजल्ट इज फेल्योर इज द अल्टीमेट रिजल्ट भाभी गोटे हम गोटे ऑल राइट तो जो एनसीएन स्टार्ट करिवो एनसीएट रे दीटा बही आसे गोटे होची क्लास 6 रो आवर पास्ट आउट आसे क्लास 12 रो गोटे आसे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12 रो तीनटा बही आसे गोटे थीम इन पार्ट 1 थीम इन पार्ट 2 थीम इन पार्ट 3 तो हमको ये जो इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 रो थीम्स इन पार्ट 1 बहीटी कहा सहित पढ़े पड़िबो एनसीएन सहित हमको सारे पड़िबो ए बहीटी medieval history ପାଇଁ ପିଲାମାନେ similarly class 7 ର NCERT our past 2 themes in Indian history part 3 medieval ପାଇଁ modern ପାଇଁ class 8 ର our past 3 themes in Indian history part 3 हमको पढ़िबार अछि I think you all have got my point भलो से आकु देखिबो and most important होची the more you write the more you close to the OPSC civil service examination पाठ पढ़िला बेले पाठ टीचर बुझेला बेले मु बुझाए एल्स एनीबॉडी जे भी बुझांचु पाठ बुझिला बेले बहुत लगे हमक आसुची मन रही जीवो बट गोटे टाइम आसीबो जेतले यू विल फॉरगेट एवरीथिंग किछि मन नथिबो पूरा बावंडल हे जीवो पूरा किछि चारियाड अंधकार डार्क 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 तो डे वन रु जदि पारुछ लेखिबा स्टार्ट कर एंड द मोर यू राइट जते अधिक लिखिबो सेते से जणी सेते तुम क्लोज करके नबो लाइक मैग्नेट तुम लेखा ही जदि आयरन हबो सी ऑफिस सिविल सर्विस हो कि आईएएस हो सी लाइक आयरन तुमको भिडिबे गोटे मैग्नेट जणे आयरन परस्पर चिपकी जाए कि क्लियर हे जिवो जदि लेखिबा करबानी जते पढुतिबो जते सुनुतिबो सुने बेले भलो लागिबो टीचर्स मैंने अछंती तो बुझिक आछंती समान रास्ता देखेबे पाठ बही कहबे बट यू हैव टू स्टडी जदि संगे संगे बुझी आसुची नो डाउट वी आर वेरी गुड स्टेज बट गुड स्टेज अछि पाठ सुन की बुझी आसुची ताकु जे संगे संगे पढिबो सेही दिन पाठ सेही दिन पढिबार अछि तार एमसीक्यू देखिबार अछि कोन एमसीक्यू पढिची देन ता पर दिन हम नेक्स्ट पाठ जिबार अछि नहले आज तो सर बुझेले बुझे गेला देखिबा हां चैप्टर सरू अछि हां दिटा चैप्टर सरू पांचटा चैप्टर सरी गेला को पेपर हिस्ट्री सर जीवनी पॉलिटी स्टार्ट हे जीवो ना हिस्ट्री कोन अछि ना हिस्ट्री किछि मन नै अगेन स्टार्ट करो चारि पांच राउंड परे फ्रस्ट्रेशन ना रखि दबा नेक्स्ट अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लास्ट को फाइनल रिजल्ट कोन ना सिविल सर्विस तो कष्ट हुए हमर कि हबनी बहुत कंपटीशन होजी प्रतिदिन पढिबार अछि काहे के एनसीईआरटी में पढिबा एनसीईआरटी सिंपल लैंग्वेज गुड फॉर बिगिनर पई एनसीईआरटी देखो आईएएस हो वेस हो सरकारी एग्जाम माने हमको सरकारी जहा भी हो जते गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हो बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करूचे माने से राज्य सरकार हो यदि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बा संवैधानिक प्रणाली सिलेक्शन सब अच्छी बा जहा भी हो सॉरी हमको सरकारी जॉब पाइबार अच्छी माने हमको सरकारी बही ही पढ़िबार अच्छी जहा स्टैंडर्ड बुक अच्छी वी हैव टू रीड देम आफ्टर दैट पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड बुक्स प्रिस्क्राइब नहीं किछि जहा भी हम गोटे सरकारी ऑफिसर अच्छी माने सरकारी बही टिके हम जानिबा तार वासना नबा कोन अच्छी बुझिबार अच्छी दैट इज द मेन रीजन टू मग अप ऑल द थिंग्स कवर बेसिक्स एंड की इवेंट्स क्लियरली भल से क्लियरली तक कवर करो हेल्प्स विथ स्ट्रांग हिस्टोरिकल फाउंडेशन फाउंडेशन का बुझार को परसेप्शन लिखा है गोटे जिनिस मुझे कहूँ तुम गोटे पॉइंट सपोज हिस्ट्री अच्छी सिविल सर्विस उद्देश्य होची सब क्वेश्चन व्हाई कहीं घटिला जदि मो हाथ में पेन टी अच्छी मु लिखुची आ पछरे किछि देयर आर सम रीजंस जोटा मते फोर्स कले जोटा मते इन्फ्लुएंस कले जोटा मते मोटिवेट कर टू टेक ए क्लास खाली सार क्लास नउचन हम देखि देबो गोटे परसेप्शन देखो को जिनिस बैक रे घटुची ता रीजन काहे से जिनिस घटिला से जिनिस घटिया पे को लोक माने थिला माने लोक माने इन्फ्लुएंस कले बा से जिनिस घटिले कहार कोन हबो जदि से जिनिस घटि न थांता ताहले को हेइथांता एंड जदि घटुची तार कॉन्सिक्वेंसेस कोन हबो एंड ता परे कोन हबो थिंक सब बले क्वेश्चन टू योर माइंड काहे की होउची कोन हला ता अर्थ न जे पीएचडी करिवो ता अर्थ न जे जदि सर कहिचंदे हमको एंशिएंट खोजिबार छै कंप्लीट एंशिएंट पीएचडी करि बसु ना वेयर पीएचडी होल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बट फाइनल रिजल्ट का प्रीलिम क्लियर होनी नो हमको गोटे एनालिटिकल वे रे रैशनल वे बी ए रैशनल वे भाबिबार अछि आ रैशनल पर्सन इज द बेस्ट पर्सन बट रैशनल पर्सन बा गोटे साइंटिफिक अप्रोच बा गोटे लॉजिकल पर्सन इज द बेस्ट पर्सन टू क्रैक द सिविल सर्विस इमोशन निजर फीलिंग्स जस्ट किक देम अवे ताकू पूरा बाहर कर दियो निज लाइफ बिकॉज इथिक्स रे भी बहुत सारा मैटर्स आसीबो ई क्वेश्चन जहा भी कहूची हमको बहुत इथिक्स इज नथिंग बट इथिक्स इज विद इन यू निज भीतर थवा इथिक्स को जागृत कर यू विल बिकम ए गुड पब्लिक सर्वेंट बा गोटे गुड सिविल सर्वेंट हे पारिबो नेक्स्ट स्लाइड को हमें जिबा ऑल राइट
we are moving to the next slide को हमें भी जीवा next slide रे कौन अच्छी देखिबा yes history रा जो अच्छी हमारा ओडिशा पार्टा ता पई आई हैव डिसाइडेड बहुत सारा रिसोर्स अछि बट बेसिक पई मो डिसाइड करछि बा गोटे सजेस्ट करि परिबी OSOU जोटा हमर अछि ओपन स्कूलिंग हम जोटा अछि ओडिसा रो ओपन स्कूलिंग जो अछि तार गोटे साइट अछि सेटी मु शेयर कर देब साइट ओपन स्कूलिंग जोटा हमर अछि इग्नो जेमते अछि गोटे सेमते हमर ओडिसा रे भी ओपन स्कूलिंग गोटे अछि ओपन स्कूलिंग त सेही वेबसाइट रे बहुत सारा रिसोर्सेस अछि फ्री रे त तमे ताकू ओडिसा पई मु सजेस्ट के मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बढ़िया बढ़िया साइट हम शेयर कर देबी क्लास एंड रे दे देबी मॉडर्न हिस्ट्री पई कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ओडिसा फ्रीडम मूवमेंट केमती कोन अछि मैं कंप्लीटली आई कैन सजेस्ट कि रेफर टू द OSOU वेबसाइट लिंक टा मु शेयर कर देबी सो इट विल बेटर फॉर एवरीवन टू गो एंड read from that website for ए पार्ट हमें एटा को फॉलो करी परिबा केमती पढिबा ओडिसा रिलेटेड कहि दोची नोट मेकिंग स्टाइल टा हमें केमती करिबा ओडिसा रिलेटेड जदि किछि इवेंट कोटे घटुची यस तो दियो मोटे छोटो एग्जांपल दोची हमें ओडिसा रिलेटेड कोन केमती करि परिबा सपोज केमती हमें करिबा मु गोटे एग्जांपल दोची एठी जस्ट पे अटेंशन काइंडली रिक्वेस्ट रिबडी सपोज गोटे इवेंट एटी हेला मोर सबु जानि थिबो 10 मिनिट पाइक रिबेलियन बा पाइक विद्रोह जोटा हमर हेतला विद्रोह हमें जानिबा गोटे इवेंट होची पाइक रिबेलियन केमते नोट करिबा त केबे हेतला यू ऑल हैव आइडिया अबाउट इट ना 1817 रे 1817 मसिया रे पाइक रिबेलियन हेतला तार कॉज कारण कोन थिला ना कारण थिला ब्रिटिश रो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हम लिखिबा ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ना केबे हिची ना इवेंट गोटे होची पाइक रिबेलियन केबे हला 1817 ने तार कॉज काहे केतिला ना ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड पर जो हमर लैंड रेवेन्यू लैंड सेटलमेंट एक्ट वास्तला से विरुद्ध रे मेन लीडर को मान थिले ना हमें लिखि परिबा बक्सी जगबंधु हमें लिखि परिबा बक्सी जगबंधु वाज द मेन लीडर इन पाइक रिबेलियन आउटकम कोन असला कोन आउटकम असला ना रिबेलियन वाज suppressed by British government हमें जानले गोटे पाइक रिबेलियन गोटे इवेंट थिला लिखिबा केबे हेत लिखिबा कॉज कोन काहे के लिखिबा हेतला मैं लीडर्स को मन थिले हेतले ना आउटकम कोन हेतला हमें त लॉन्ग रन रे पढिबा रिवीजन पई दिस इज द मेन स्ट्रेटजी एंड हमको डे 1 रु ए भलिया कवर परिवार अछि सिग्निफिकेंस टा स्लाइड टिके गड़बड़ अछि हम सिग्निफिकेंस लिखि परिबा फर्स्ट आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बा सिंबल ऑफ ओडिया प्राइड एंड नेशनलिज्म हम मध्य लिखि परिबा तो एई भली भाबरे जो नोट मेकिंग कथा कहले हम सब सब्जेक्ट करि परिबा एई वे रे हम सिखेबी केमते करबा अछि तो लॉन्ग टर्म रिवीजन पई हमको शॉर्ट वे रे एई भली बहुत सारा जिनिस मन रखिबार अछि दैट इज द रीजन वी हैव टू फॉलो एंड बहुत निजो को डिसिप्लिन करबा अछि हम नोट मेकिंग स्टाइल को मध्य डे 1 रे हमको डिसिप्लिन करके नेकी जिबार अछि एबे हिस्ट्री क्लियर हे गला बेसिक स्टार्ट केमती करबा एबे आसीबा ज्योग्राफी पार्ट को ज्योग्राफी पिला माने पढ़ा पे हमको मु बुक्स किछ रेकमेंड करछि बुक्स टू रीड क्लास 11th रो सेम एनसीईआरटी पूरा लाइक मंगलसूत्र हमको पूरा बर्तन बांधी की रखिबार अछि एनसीईआरटी कोटा ना एनसीईआरटी कोटा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 रो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लास 12 रो कौथि पई ना फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी पई हमको क्लास 11 रो फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लास 12 रो कोटा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बा एटा सप्लीमेंटरी फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट बी पार्ट जदि कहिबा मस्ट रीड कोटा करिवो ना फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी मु बुक लिंक शेयर कर देबी क्लास 11th रे एटा भी अवेलेबल हे जिवो हमको पीडीएफ आकार रे मिली जिवो एंड ता सहित हमको फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पर सप्लीमेंटरी वे रे हमको सेटा पढिबार अछि ना फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी पाई इंडियन ज्योग्राफी को जदि आसीबा
तीनोटी बुक आई हैव सजेस्टेड देयर गोटे होची क्लास 9th रो कंटेम्पररी ऑफ इंडिया 1 क्लास 11 रो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11 रो दीटा बुक अछि गोटे होची फिजिकल पई गोटे इंडियन ज्योग्राफी पई एटा होची इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड क्लास 12 रो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी सप्लीमेंटरी तो ए दीटा मस्ट बी ए पार्ट ए दीटा को हमको निश्चय पढ़िबार अछि ए दुटी बुक को हमको मस्ट पढ़िबार अछि एंड एट द सेम टाइम सप्लीमेंटरी बा पढ़ी साइला परे जदि में पारिबा एटा को हमको सारिबार अछि ए बहिटा नेक्स्ट स्लाइड को हम जिबा हेबे नेक्स्ट अछि समतंकर प्रिय सिविल सर्विस रे जदि गोटे सब्जेक्ट समथि भलो लागे दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट मु कहि पारि मोर भी पॉलिटी पाई एवरीबॉडी रिकमेंड्स यू टू रीड लक्ष्मीकांत ठीक अछि लक्ष्मीकांत भी पढ़िबार आवश्यक अछि but ता पूर्वरु before Lakshmikant I suggest some of the books to read them to read before starting Lakshmikant कोटा सेटा फास्ट होची क्लास 11th रो दुईटी बही मिली जिवो गूगल कले हमकु ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्लास 11th रो दुईटी बही अछि गोटे होची ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट Indian administration and constitution again I am repeating polity pai Lakshmikant is enough for Odisha Public Service Commission for Odisha Civil Service exam polity le Lakshmikant ku jiba purvuru I request everybody to go through three books tinta bahi padiba and personally will come and say कि that sir आपण कहितले ए तीनटा बुक पढिला पर हम लक्ष्मी that जे those who are able to read ठीक अछि because civil service रे बहुत various background आस्थांती माने है जेकर आर्ट्स लाइन थिबो all are humanities background so जो माने science stream engineering medical veterinary various backgrounds are there and various multiple students are there जे माने various background आस्थान से लगी मु सजेस्ट करिवि पॉलिटी रो organs of the government Indian Administration and Constitution of class 11 and Democracy in India of class 12. Read these three books and then go to the Lakshmikant. Then we'll get a complete idea of Indian democracy, the great Indian political structure. तो भारत जो महान पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अच्छी से डेमोक्रेसी को बुझे पहले हम प्रथमे ता भितर पसेम पड़िबो आ निजे को भाबे पड़िबो थिंक लाइक ए ब्यूरोक्रेट्स थिंक लाइक ए पॉलिटिशियन think like a member of parliament or MP भाबो कोन घटुची पार्लियामेंट पढिला बेले निजे को MP भाबो then will get the idea कोन घटुची पार्लियामेंट रे सब किछि the game of minds my friend civil service is not but the game of a mind or game mind को जते साफ करबो mind को जते पूरा sharp means सब बेले रखो कि इंफॉर्मेशन केते मो माइंड को आसुन ताकि मु लिंक अप करे that is the main one of the best way to clear the civil service examinations the polity pai I can suggest ki gote hoche ame organs of the government Indian administration and constitution and democracy in India ए तीनटे boy को पढिला परे idea basic idea पळि आसीबो ideas आसीबो then we'll move to the Lakshmikant को हमें जाई परिबा and प्रति सबरो important कहिबी MC को जते हम करिबार अछि हमको day 1 रु ही MC को टारगेट करिबार अछि from the day 1 itself जते पढिबा हमको MC को प्रतिदिन 10 20 जते भी हो हमको लगेबार MCQ अछि so that we can able to clear the examinations किसी difficult नहीं exam clear करिबारे next slide को जिबा that is the economy part बहुत difficult लगे जदि पॉलिटी कहबी समतक फेवरेट तन इकोनॉमी ता बहुत difficult लगे तो किछि टेंशन हवा नहीं इकोनॉमी सीरीज जीवा में आनिबा निजे आई टीच यू कंप्लीट इकोनॉमी कोन केम देई पारे पढेबी से रिगार्ड रे साइंस टेक ऑलरेडी हैव स्टार्टेड देखि पारिबो साइंस टेक रो बे चालीसी स्पेस टेक्नोलॉजी चालीसी साइंस टेक रो सब किछि कवर हबो तो इकोनॉमी रो सीरीज भी आसीबो आई विल टेक इकोनॉमी सीरीज सो यू कैन वॉच कंप्लीट इकोनॉमी in my in this channel anyway the economy by basic by here I cannot suggest you to go to the NCERT but it is personal opinion जो मैंने follow करबे NCERT जो मैंने पढ़ी so far it is better but for economy I have picked one book जोटा मोर पसंद आसी that is शंकर गणेश book रे तमरो basic economy जहा भी अछि
कंप्लीट विल गेट आइडिया सब बेसिक पूरा क्लियर कला परे तुम्हें जदि मोर पर्सनल चॉइस होउचंदी मृणाल पटेल मृणाल सर को नोट जो माने पढ़ी परिबो बा क्लास अवेलेबल अछि तमरा यूट्यूब रे ताको आराम से सार को चैनल देखि परिबो एंड पर्सनली मूवी नौची इकोनॉमी ताको भी देखि परिबो तो जोठी तुमको इजी होउची सेटु देखो पर रेगुलरली कंसिस्टेंसी इज द ओनली कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इज द ओनली की जहां भी करूचो इकोनॉमी को एमती सारे पिला मन जदी सारिबा पे हमको 50 से 60 क्लास सरकार आमे मन को दुईटी क्लास करले पिला दुईटी क्लास देखिला थर्ड क्लास को पिला को भल लागिबो ना देखिया अलगा पाठ सर इकोनॉमी देखिबा एमती करले के सरीबो नाही लास्ट ईयर एंड को मध्य एग्जामिनेशन पाखे आसीबनी बार हमर पेंडिंग थिबो किसी सिलेबस सरू नाही बट इकोनॉमी पे आई सजेस्ट कि शंकर गणेश को जाओ नले मृणाल सर को नोट को जाओ जो डाउट अछि पूरा बेसिक स्क्रैच करबा चाहतो शंकर गणेश बुक को पढ़ी परिबो क्लियर हला परे स्टार्ट विथ मृणाल सर नोट्स बहुत बढ़िया बार सर पढ़ी जंती यू विल गेट आइडिया अबाउट द इकोनॉमी नेक्स्ट आसीबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 6 टू 10 साइंस बुक फोकस ऑन जोटा हमर अछि एनवायरनमेंट ऊपर फोकस करो फिजिक्स बेसिक क्वेश्चन से पढु जो पेस रे बायोलॉजी ऊपर हमको मध्य फोकस करिवार अछि बायोलॉजी ऊपर मध्य हमको हैव टू फोकस मच ऑन बायोलॉजी के बायोलॉजी के क्वेश्चन आसी जाय प्रति वर्ष आउ सिलेक्टिव रीडिंग कोठु ना क्लास 11 12 रो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सिलेक्टिव रीडिंग करबा अछि नॉट ओनली जोटा आवश्यक अछि सिंग द क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिकी हमको से अनुसार एनसीईआरटी को चैप्टर दरकार अछि हमको फॉर साइंस हमको पिक करिवार अछि कोटा ओपीसी रे कोन आसुची हमको से अनुसार पिक करिवार अछि बुझि पाछो तो नॉट ऑल चैप्टर्स आर रिकमेंडेड और रिक्वायर्ड सिंग द मे पर सीजन नबा कोन किन देई पारिबो तर माइक्रो टॉपिक रे करिबा केमती कोटा कोटे बेसिक ओवरव्यू कोन किन स्टार्ट हमें करि पारिबा देन हम आनिबा already I have told ki last few chapters like environmental issues complete NCERT नुह environment पाई भी बायोडायवर्सिटी हो कि क्लास 9 10 रो जो सब सिलेक्टिव चैप्टर्स अछि हमर एनवायरनमेंट पाई ताकू हमें एनवायरनमेंट बायोडायवर्सिटी में पढ़ी परिबा ए रिगार्ड रे बायोडायवर्सिटी बा एनवायरनमेंट हो कि साइंस टेक पाई हो विल टेक कंप्लीट आर स्ट्रेटजी कोन किन हेई परिबो नबा बेसिक ओवरव्यू में दोचंती हमें कोडा पढ़ी परिबा आ पई क्लास 12 बायोलॉजी लास्ट फ्यू चैप्टर्स लाइक एनवायरमेंटल इश्यू बायोडायवर्सिटी से क्लास 9 10 रो कोटा चैप्टर्स ऑन एनवायरनमेंट नेचुरल रिसोर्सेस हमें पढ़िले बायोडायवर्सिटी पार्ट अछि हम जानि परिबा and even it is applied to the science part also. I hope you are getting my point. Next we are coming to the most important. Already I mentioned we'll make another detailed video very soon where we'll set the complete booklist asiba for both prelims and mains including standard book kon rahiba sources strategy. This video is just the beginning to help you start your journey. Stay tuned because we will guide you step by step through everything you need जहाँ भी आवश्यक अच्छी आम सब कि क्षेत्र आणबू धीरे धीरे एंड एबे आसबा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होची आंसर राइटिंग आम कौन केमती करबा पिला माने गोटे स्टोरी एठी मु कहूची प्लीज काइंडली all are requested to pay attention to my story and then we will get idea कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रे दुईटी ग्रुप रे पिला थिले इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर दिने तांकर टीचर आसिले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रे दुईटी ग्रुप रो स्टूडेंट अछंती गोटे ग्रुप रो स्टूडेंट थिले गोटे ग्रुप रे 30 जन स्टूडेंट थिले आउटे ग्रुप रे 30 जन स्टूडेंट थिले अगेन आई एम रिपीटिंग गोटे ग्रुप रे 30 जन स्टूडेंट थिले आउटे ग्रुप रे 30 जन स्टूडेंट थिले उठी ना गोटे यूनिवर्सिटी ले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जे कोनसी गोटे यूनिवर्सिटी गोटे एक्स यूनिवर्सिटी थिले गोटे ग्रुप रे पिला होचंती बहुत स्कॉलर हाई स्कॉलर बा 100% रे पिला आउट होचंती बिलो एवरेज बा 70% रे पिला तांकर प्रोफेसर गोटे टास्क देले जे गोटे पोर्ट बा गोटे भलो ड्राइंग करिवो से माने ए वर्ष अवार्ड बेस्ट अवार्ड पाइबे बेस्ट स्टूडेंट रो अवार्ड पाइबे बुझिलो दीटा ग्रुप को से माने टास्क देले बोथ ग्रुप आर असाइन विथ डिफरेंट टास्क कौन देले ना गोटे ग्रुप को कहिले तमे
तो पिला माने कौन मु कहली थी ना दीटा ग्रुप रो पिला थिले गोटे ग्रुप रो पिला भलो थिले आउ टिके बिलो एवरेज थिले से स्कूल प्रोफेसर कौन कले ना तमे गोटे स्पॉट तैयारी करो गोटे किछि भी स्टैच्यू तैयारी करो 30 डेज भीतर करिक मते देखा ए ग्रुप रो पिला मन कुहा गला तमे बेस्ट करिक देखिबो जो माने 100% दोथिले बेस्ट करिक देखिबो हमको कुहा गला 70% लागू जहा करूच कर सोस हमको देखे कि खाली शो करो बट ए ग्रुप रो कुहा गला जोडा भलो करथिले ना गोटे बेस्ट करिक देखाओ गला किस दिन स्टिपुलेटेड टाइम पर देखा गला जे आश्चर्य हम सुने कि ए जो पिला माने 100% मार्क रखुदेले से माने गोटे बहुत खराब पट बा स्टैच्यू करिक देखेले गोटे से पट हो स्टैच्यू जहा भी एनी बहुत खराब जिनस गोटे करिक देखैथिले बहुत हाई स्कॉलर थिले बट जो माने 70% रखिथिले बट तांकू आशा नैतला जहा करूच कर से माने बहुत बढ़िया बेस्ट जिनिस करिक देखिले काहे की बिकॉज एठी जो भलो पिला थिले सो टार्गेटेड भलो पिला तांको मुंडरे पसिला हमकु डे 1 टे भलो करिवार अछि बिकॉज वी हैव टू शो द सोसाइटी वी हैव टू शो द टीचर्स ए बेस्ट पार्ट तो जते बेले हमें डे 1 चेष्टा करिवा बेस्ट करिवा सब बेले हमें गड़बड़ करथिबा बट एठी जो पिला माने कहला कर से माने गोटे कले खराब देखला भांगी देले आ गोटे कले खराब हैला ताको रखि देले एमती करी 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 लास्ट को गोटे बढ़िया स्पॉट गोटे बा गोटे पॉट हो जहा भी गोटे देखिले अर्थ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट खराब हम आउ टिके भलो हम टिके खराब धीरे 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 इम्प्रूव करी करी गोटे बेस्ट टाइम पहुंचीबा जदि डे 1 रे ए पिलांग भला टार्गेटेड होबा बा असाइन होबा भलो कर देखा हमें केबे भलो हो नथिबो फाइनल आउटपुट कोन बिग जीरो ए माने करि पाइले कि कंप्लीटली फेल हे गले गोटे माने जदियो खराब थिले बट फाइनली से माने भलो हे कि आसीले कोटा ना बेस्ट ता एई कांसेप्ट को जे पैराडॉक्स ऑफ परफेक्शन परफेक्शन ऑफ पैराडॉक्स द डॉक्ट्रिन ऑफ परफेक्शन बा पैराडॉक्स ऑफ परफेक्शन थ्योरी अछि नेट रे गूगल रे सर्च करिवो हमको नोबडी इज एब्सोल्यूट परफेक्ट कहीं भी दुनिया रे एब्सोल्यूट परफेक्ट नो आंसर आंसर राइटिंग माय ऑल माय डियर एस्पिरेंट इट इज ए आर्ट प्रतिदिन निजको इम्प्रूव करिवार अछि प्रतिदिन हमर भूल को निर्धारण करिवार अछि केते भूल हमें करूछंती कोन दिन भर केते टाइम वेस्ट कले इट डजंट मैटर केते तमे टाइम वेस्ट करछ बट डजंट इट मैटर्स करिवो जते तमे जानि परिवो को वे टाइम वेस्ट कली काहे वेस्ट करा ता पर ताको इम्प्रूव करिवा आंसर राइटिंग करिवा एमसी करिवा सो दैट पेपर पढिवा सो दैट वी कैन become a worthy civil service aspirant officer haba na haba that a different scenario we have to give our best 99% and everything is being determined the almighty परिश्रम एते करिवार अछि the luck has to come to us हमको हम भाग्य हम पाखु आसी पड़िबो because luck भी कहबो ना ए पिलाटी ही परिश्रम करछि the aspirant is doing a hard work so I have to give ताकु रिवार्ड दबार अछि without hard work without हमर डेडिकेशन कंसिस्टेंसी नथिंग इज किछि भी अचीवेबल हेबो नाही सो दैट कहबार उद्देश्य होछि हमको डे 1 रो जदि आंसर राइटिंग कले खराब हो हां खराब हो नोबडी इज गोइंग टू हमके कहीं आंसर राइटिंग हमको तेके जज करनाती हम निजे लिखुचंती जे भी कहबो ना खराब हैछि त कुह तू लिखि देखा ऑल आर हियर टू क्रिटिसिज्म टीचर खराब पिला खराब सब क्रिटिसाइज करिवे त कुह जदि एक्चुअली हमर वेल रिसर्च ही हबो जे आम भीतर थिबा गुड क्वालिटीज गुड मोरल्स को एक्सट्रैक्ट करि परिबो प्रत्येक बेटिट से हमर खराब बाहर करिवे और आखते मो भीतर भी किछ भलो क्वालिटी अछि जदि एक्सट्रैक्ट करि पाछो देन प्लीज बी विथ मी हाले जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ गेट आउट फ्रॉम द एनवायरनमेंट आई हैव टू रीड आई हैव टू क्रैक द एग्जाम दैट इज द फाइनल गोल एंड फाइनल डिसीजन व्हाट आई एम गिविंग यू मानिबा नमिना दैट इज अप टू यू सो दैट एति कहिबी टाइम बहुत अछि निज पाखरे बट गोटे कथा होछि डिसाइड करो मते काहे की स्टार्ट करछि सिविल सर्विस काहे की ओपीसी स्टार्ट करछि से की पॉइंट जानि परिबो रीजन the way on the base where you have started your OPC journey then you will get the key to open all your closed chambers so you will crack the exam तो आंसर टाइम डेली करिवार अछि खराब हो भल हो कंसिस्टेंसी रखिबार अछि डेडिकेशन कंसिस्टेंसी परसिवरेंस हार्ड वर्क एंड सब बेले हमको गोटे प्लेजेंट खुशी जनरेट करिवार अछि मोटिवेशन बाहरो गोटे मोटिवेशन और डिसिप्लिन मोटिवेशन वर्क्स फॉर सर्टेन स्पैम ऑफ टाइम but a disciplined man can break anything but disciplined personality got a mature man can do anything in the world so motivation move करे कि जे भी करे आवश्यक अछि बट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे निजको मोटिवेट करो एंड से मोटिवेशन ही तुमको डिसिप्लिन लाइफ रे पहुंचे परिबो
so that you can not only this UPSC, not only this civil service, but also crack all the exams in the world. Various exams are there. ନିଜକୁ prove କରିବ ନିଜର ନିଜେ why we have started, our parents, our nation, our state, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ କରିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ. All right, I hope you all have got my points. ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିବା and record କରିବା and ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍ ରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିବା, ତାକୁ analysis କରିବା. So I request everybody to watch the classes, to note down everything. ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାର and ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ share and subscribe କର. Thank you. ଜୟ ହିନ୍ଦ.